Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision, your biology mentor. आज के सेशन में we are going to begin with a discussion of CBSE board exam paper 2022, right? As we know that there is a science paper में you'll have all the three subjects together in your class 10th, that is physics, chemistry and biology. तो आज के सेशन में हम बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. And I hope, and I'm 100% sure that after seeing the bio questions in the science exam, you must be very, very happy because all the questions in the paper are already discussed in the classes previously, right? So I hope तुम सबके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं. Your parents must be very happy. You must be very happy. चलिए start करते हैं discussion bio के questions का. Question number 1 says, but before discussing the question, I mean, you must be knowing that there are 3 sections in the science paper, section A, B and C. Section A contains question of 2 marker, B contains questions of 3 marker and 4 contains questions of 4 marker, right? So question number 1 says, mention the function of placenta, A, B fallopian tubes, C uterus and D ovary in the human female reproductive system. तो आपको इन सभी के functions बताने हैं. Now this is your topic 1 of term 2, how do organisms reproduce. कई बार already हम क्लास में इस question को डिस्कस कर चुके थे. तो placenta is a tissue which is formed during the gestation period. Once the fertilization is done, that means the beginning of the gestation period is there. And during the pregnancy means the gestation period of 9 months in women. So during that gestation period, placenta is formed and it is a nutritive tissue that, fulfills all the physiological demands of the newborn in the mother's womb. So basically, it is a very nutritive tissue that gives complete nutrition to the developing baby in the mother's womb. Right? तो ध्यान रखना है. अब देखो, this is 2 marker question. That means you'll have half for each one. तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे पेपर में because you have to do all the questions of physics, chemistry and biology. आधा नंबर का question है. Accordingly, we'll write 1 or 2 lines, basic concepts, basic functions. So what you will write, it is a nutritive tissue that fulfills all the physiological demands of the newborn in the mother's womb, formed during gestation period. Though gestation period, the word is not given in your NCERT, but I have already told you about that. So mention kar doge, it will be good for you, right? Next is fallopian tubes. हमने female reproductive system पढ़ा था. Secondary sex organs in females के बारे में मैंने आपको बताया था. And fallopian tubes is one of the part of the secondary sex organs in females, right? तो fallopian tubes को हम oviducts भी बोलते हैं. यहाँ पे आपको आधा नंबर का question पूछा है about fallopian tubes. So you'll just write 1 line. It is a secondary sex organ of the female reproductive system present in females. And the function is, it is the site of fertilization. मतलब कि when the male gamete reaches to the female body, then the fertilization between the 2 gametes occurs at fallopian tubes. तो आप simple एक line डाल दोगे, it is the site of fertilization. Simple, you'll get full marks for this. Okay, next is uterus, right? Again, the secondary sex organs in females. Uterus is a mother's womb, right? Simple again, 1 or 2 lines, as I said earlier. Secondary sex organ in females, main site of implantation. Once the zygote is formed and the embryo is developed, then it is going to be implanted into the uterus of the women. So, but simple so 1 line, site of implantation and site of the development of the baby. Actually, it is called as the mother's womb where the development of the baby takes place. So, बहुत ही simple सा आंसर आपको लिखना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना, straight forward question पूछा है. Accordingly, you will write. It is just of half marks. Accordingly, आपको लिखना है. Next is ovary in the human female's reproductive system. अब यहाँ पे ovaries के बारे में पूछा है, तो आप उसको specify करोगे. It is the primary sex organs of females. Though it is only asked about the function, but if you write this, you'll add numbers to your score,
right? So simply what you will write, it is a primary sex organs. We know that primary sex organ is the site of the formation of gamete. अब क्योंकि हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो आप सिंपल एक लाइन क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज ओवम टेक्स प्लेस हियर, राइट? तो बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, सिंपल आपको एक एक फंक्शन पूछा है, आधा आधा नंबर का है, अकॉर्डिंगली यू विल राइट, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस. Okay, let's see what question number 2 says. It says using height, that is tallness and dwarfness of a plant as an example, show that genes control the characteristics or traits as an organism. So basically again this is 2 marker question and this is from the topic heredity and evolution. Many a times I have already told you this question in the classes, given in the test so many times. You must be complete aware of इस question को हमें कैसे answer करना है, बहुत अच्छे से आप जानते हो. I have told you that there are 7 traits chosen by the Mendels to prove his experiments from the pea plant, that is Pisum sativum, right? तो वही 7 traits में से there is one trait that is height, and for every trait there are 2 traits which is to be shown, either dominant or recessive, right? तो अगर हम height की बात करें तो tallness is basically the dominant character and dwarfness is basically the recessive character, right? And we also know that tallness is the dominant over the dwarfness, है ना? Because tall is the dominant character, it is going to dominate, it will not allow the recessive gene, that is dwarf, to express itself. This is what is being stated by first law that we have discussed in the class, that is law of dominance. Right? Now what this law of dominance says, it says that whatever the characters which appear in the F1 generation are the dominant traits. And as we go through in the class about monohybrid cross, there I have told you that if we take into account only one trait, that is monohybrid cross. And in that cross, we have studied that whatever the characters which appear in F1 generation are the dominant characters, and what characters are going to appear in F1 generation? The tall pea plants were there. That means tall pea plants does not allow the expression of the dwarf pea plants, and these characters becomes recessive in F1 generation. This is how we can conclude that this gene of tallness does not allow the expression of this gene, that is dwarfness, and it controls the trait of an organism. Right? So I have already told you about this in the class. इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है. You have to state also the law of dominance, और उसमें आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. It is being completely shown in case of monohybrid cross. Right? You'll get full marks for this. चलिए आगे देखते हैं. What does next question says? Okay. In cross between, this is or, either you can do that one or you can do this one. Actually these questions are more or like same type of questions. वहाँ पे आपको कोई example नहीं दिया हुआ है. Straight away you have to express yourself. यहाँ पे आपको example के through monohybrid cross को express करना है. Right? The only difference between the two is this. चलिए, so the question says, in a cross between red colored and white colored flowers, when plants with red colored flowers of F1 generation were self-pollinated. तो पहले आपको F1 generation को you have to take into account. देखो हमेशा ध्यान रखना, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि red color flowers will take into account and white color flowers will take into account. So for redness, it is RR, and for white, it will not be W. It will be the lowercase r. So it will be the lowercase r. So this will become our parent generation. When they form gametes, it will be capital R and capital R. These two alleles get separated when they forms the gametes. Right? In the next case, it is small r and small r. Now, when they cross the F1 generation, we'll get. In F1 generation, if we'll put these gametes into Punnett squares, what we'll get? We'll get like this. Capital R, small r, capital R, small r. Right? Then
capital R, small r, capital R, small r. Now this is our F1 generation, yani ki all are tall plants. All are tall plants with the heterozygous condition capital R and small r, right? So this is our F1 generation, and the question says, when F1 generation were self-pollinated, अब हमने क्या करना है, F1 generation को self-pollinate करना है. Plants of F2 generation were obtained in which 75% of plants with red flowers and 25% plants were white flowers. ठीक है, तो अभी करके देखते हैं what will be the F2 generation results. Are they same as given in the question? Explain the inheritance of traits in the above cross with the help of a flow chart only along with the ratios of the plant obtained. तो हम यहाँ पे रेशियो भी बताने हैं of the F2 generation specifically. तो हमारे पास F1 generation में किस तरह के offsprings आएंगे? Heterozygous hybrid forms, capital R and small r. अब हमको F2 generation निकालनी है. कैसे निकालेंगे? When F1 generation were self-pollinated. तो अभी हमने क्या किया? Capital R, small r, and then capital R, small r. Again, we'll put these gametes formed by these parents into, तो gametes क्या बनेंगे इनके? Capital R, small r, capital R, small r, and we'll put the gametes produced by one parent on one side, the other parent on other side. What we'll get? We'll get, just a second, in this time, we'll get capital R, capital R, capital R, small r. Again, capital R, small r, and the two lowercase r. Now, it says that plants of F2 generation were obtained in which 75% of the plants with red flower color. अब देखो ना, ये this is actually indicating the red flower and this is indicating the white flower. Right? Now we know that dominant trait does not allow to express the gene of the recessive trait. Capital R becomes the recessive trait. So here this is also tall, this is also tall, and this is also tall. Why? Because here one R capital is there. It does not allow the gene to express of the small r. Similarly, here is the same case, and the two recessive R, the two lowercase r will show the character of phenotype of dwarfness. That means we'll get 75% as. अब क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कलर की, तो instead of T we'll write over R. And यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? Instead of D we'll write over, that is small r. ठीक है? So in this case we'll get what? The red flowers and only one white flower. Right? 75% will get red flowers and 25% we get white flowers. ठीक है, अब देखो पूरी कहानी अगर थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्रेस करना है, यानी कि 3:1 का रेशियो आ गया हमारा. रेशियोज आपसे पूछे हैं, क्या पूछे हैं? विद द रेशियोज ऑफ द प्लांट ऑब्टेन. तो आप यहाँ पे इट लुक्स लाइक इट अपीयर्स टू बी रेड फ्लावर्स इन केस ऑफ फिनोटाइप. फिनोटाइप हमने क्लास में डिस्कस किया था, द अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेट. तो अपीयरेंस क्या है यहाँ पे? 3:1 के रेशियो में इट इज 3 for 75%, that is red flower, and 1 for 25%, that is white flowers. And this is which kind of ratio? Phenotypic ratio, यानी phenotype है ये flower का. अब अगर आप इसको ratios पूछे हैं, you will also write 1:2:1 is the genotypic ratio or genotype. कैसे आप बताओगे? यहाँ पे you'll have to show also that this is homozygous red flower, this is heterozygous red flower. Why? Because one is capital R and the other is small r. But we know that the dominant trait does not allow the expression of the recessive trait. That is why it becomes our red flower. Right? So for one we'll write what? Homozygous red. For two, that is this R and this R, we'll write heterozygous red flower. And for this one, we'll write homozygous white flower.
आई गेस ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि रेशियोज पूछे गए हैं, यू विल हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स फॉर इवन योर 2 marker question. Actually 1 marker is for 3:1, that is 75% and 25%, and 1 marker is for 1:2:1, because they are asking the ratios to you. So you'll have to mention all these things, then only you will get the marks. ये हमने क्लास में कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है. आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को सही आंसर किया होगा. चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. The improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. List 2 reasons to justify the statement. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हमारी डे टू डे लाइफ से कंसर्न कनेक्टेड क्वेश्चन है. And this question is from the topic our environment, जो कि आपके टर्म 2 का टॉपिक था बायो सेक्शन में. तो पूछ रहे हैं आपसे कि improvement in our lifestyle has led to the generation of large amount of waste material. Obviously, देखो इसमें ना आपको 2 एग्जाम्पल्स को कोट करते हुए चलना है ना. क्या पूछा है आपको? 2 रीजंस बताइए जिससे हमको ये पता चले कि ये स्टेटमेंट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड. तो इसमें आप एक तो लिख सकते हो increased increased use of disposable plastic cups, plastic bags, especially in the trains, plastic cups, plastic plates, spoons, in the trains का example डाल सकते हो, है ना. तो because these are actually generally made of the components which are non-biodegradable. तो अब अगर non-biodegradable substances के बने होंगी सारी चीजें, that will accumulate and creates the pollution in the environment. तो एक एग्जाम्पल आप ट्रेन में यूज से चीजों का डाल सकते हो, विच इज डिस्पोजेबल. एक्चुअली इन रिसेंट ईयर्स इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स स्पेशली लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट, है ना. एक एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, अगेन यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लेट्स and basically all the disposable used in the parties, marriage parties, उसका आप डाल सकते हो. And then obviously these substances are made up of non-biodegradable substances, again gets accumulated in the environment, right? So instead of using disposable bags, we should not use these kind of substances. That will always lead to the accumulation of non-biodegradable substances and then finally leads to a polluted environment. राइट. तो आप ट्रेन का एग्जाम्पल और मैरिज पार्टीज और पार्टीज का एग्जाम्पल डाल सकते हो. स्पेसिफिकली व्हाट यू हैव टू मेंशन द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिस्पोजेबल आइटम्स इन रीसेंट ईयर्स. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, दैट इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैज एक्चुअली लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल इन द एनवायरनमेंट, राइट. तो इस तरह से आप, बिकॉज दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस गेट्स एक्यूमुलेट, तो डेफिनेटली इट विल लीड्स टू द पोल्यूशन एंड polluted एनवायरनमेंट. फाइन. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डे टू डे से रिलेटेड पूछा है आपसे. ओके, द चेंज इन पैकेजिंग. अब ये और करके पूछा है, ईदर ऑफ द टू यू विल हैव टू आंसर, ईदर द फर्स्ट वन विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड or this one. Again from the topic our environment, the change in packaging has resulted in waste becoming non-biodegradable. Give 2 examples for daily life. Justify this statement. Same thing पूछी है in a different manner. उसमें आपको लाइफस्टाइल का इंप्रूवमेंट बताया था, दैट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. इसमें आपसे पूछा है कि हमने क्या किया, पैकेजिंग, हमारा जो पैकेज मटेरियल है वो इस तरह से चेंज हुआ है दैट इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. वेस्ट मटेरियल से मतलब उस क्वेश्चन में इट इज अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट. तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे आपसे चेंज इन पैकेजिंग स्टाइल पूछा है, तो व्हाट इंक्रीज यूज ऑफ द एल्युमिनियम्स फॉइल्स इन पैकेजिंग, वन एग्जांपल यू कैन कोट लाइक दिस. देन इंक्रीज्ड यूज ऑफ पेपर बैग्स, पेपर पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक पॉलीथीन्स आप लिख सकते हो, है ना. तो बेसिकली दीज आर ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एंड द पॉलीथीन बैग्स, द एल्युमिनियम फॉइल शुड बी replaced by the paper cups and bags, though it has been increasing day by day in a very gradual manner. But then for 2 examples you can write increased use of aluminum foils in packaging, number 1. Number 2 is increased use of polythene bags and plastic bags are actually leads to the greater accumulation of non-biodegradable substances, because the substances of which these items are made up of, they are completely non-biodegradable. Right? So इसको हमको remove करने के लिए we should use those substances which are biodegradable like papers.
राइट सो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, डेली लाइफ से कंसर्न है। चलिए, व्हाट इज रीजेनरेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, टॉपिक इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो उसमें मैंने आपको बताया था द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर, asexual reproduction and sexual reproduction. So this question is about asexual reproduction, rather types of asexual reproduction. We have discussed few types of asexual reproduction like budding, like fission, like spore formation, and the one is regeneration. So basically आप कहाँ से start करोगे, because they are asking about what is regeneration. So you'll start with that it is a kind of asexual mode of reproduction. Right? And then you will define what is regeneration. So it is an ability of an organism to make up its lost part and grows as an individual. जब organism अपने lost part को भी use करके it grows into a new individual, उसको हम regeneration बोलते हैं. Fine. Now explain the process of regeneration in Planaria. अब Planaria is an example. प्लैटीहेल्मिन्थ्स फाइलम को बिलोंग करता है. आपको रीजेनरेशन प्रोसेस शो करना है. प्लेनेरिया में आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही ब्यूटीफुली इस डायग्राम को एक्सप्रेस किया हुआ है. तो यहाँ पे क्या करो, एक छोटा सा प्लेनेरिया बना दो लाइक दिस, बहुत ही क्यूटिश सा ऑर्गेनिज्म है. अब आपको रीजेनरेशन दिखाना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, वील कट दिस ऑर्गेनिज्म इनटू 3 पीसेस. राइट इसको आप 3 पार्ट्स में कट कर दो, ऐसे करके शो कर दो, एंड देन शो दैट ईच इंडिविजुअल पार्ट विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह से करके आप देन you'll have to draw 3 planarias. इस तरह से आप शो करोगे, बिकॉज बायो में इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट. आप डायग्राम के थ्रू सारी बात अपनी बोल सकते हो, एंड दिस इज द बेस्ट वे इन एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन केस ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट, बिकॉज टीचर्स डोंट हैव विल नॉट गो थ्रू द थ्योरी पार्ट. इवन वंस यू ड्रॉ द डायग्राम कंप्लीटली विद लेबल, तो आप उसको अच्छे से यू विल गेट द मार्क्स. दिस इज द बेस्ट वे टू स्कोर द नंबर्स इन योर बायो सेक्शन. तो अब आपसे पूछा है प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन प्लेनेरिया, तो आप कैसे लिख दोगे? Planaria, if we cut the pieces of planaria into 3 parts, each part will grow into a new individual, because at the point of wound part there will be cell division takes place, proliferation takes place, and each part will grow into new individual. So this is how regeneration in planaria takes place. You will get full marks for this, right? चलिए आगे देखते हैं. ओके अब देखो एक और करके दिया हुआ है, आप इसमें इस तरह से भी लिख सकते हो. ओके जस्ट अ मिनट, दिस इज द सेम क्वेश्चन आई हैव ओपन्ड. यस, क्वेश्चन नंबर 11th. In flowering plants, now this is 3 marker question. Up till now what we've discussed were 2 marker of section A. Now this is section B of 3 marker question. In flowering plants, the pollen grains are transferred to stigma by pollination. है ना, हम जानते हैं pollination is the process of transferring of pollen grains from the anther to the stigma. So this is what the question says. But the female germ cells are present in the ovary. I have told you so many times in the class that in case of plants, there will be no direct contact between the male and female gamete. First, the pollen grains will fall on the stigma. Then after some time, the male gamete will reaches to the female gamete. And this is what question is asking to draw, to show it. Explain with the help of label diagram, only concerned parts, how the male germ reaches the ovary, how the male germ cell reaches the ovary. अब आपको यही बताना है यहाँ पर. तो हमें क्या करना है, डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्टिग्मा चाहिए, है ना. तो स्टिग्मा के लिए यू विल हैव टू ड्रॉ व्हाट, यू विल हैव टू ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट. एंड वी नो दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, I mean all the parts will rest on a structure that is called as thalamus. क्लास में खूब अच्छे से डिस्कस किया है हमने ये चीज. नाउ विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम यू हैव टू शो. सो दिस इज आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इज कंसिस्ट ऑफ, दिस इज व्हाट, दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, एंड दिस इज योर स्टिग्मा,
right? Now what they're asking that pollen grains are transferred to stigma by pollination. So now you have to draw what? You have to draw the pollen grain. So we'll draw a pollen grain, right? Pollen grain has germ pore in it, I have told you, because at that point only the pollen grain will germinate and forms the pollen tube. तो अब हमको क्या बताना है? But the female germ cells are present in the ovary. तो आपको बताना है that how male germ cell reaches to the ovary. तो male germ cell कैसे reach करेगा? This is our what? This is our pollen grain. ठीक है? अब ये pollen grain germinate करेगा. जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके बनाएगा आपका पॉलन ट्यूब. ठीक है, तो यहां पे आप इसको मेंशन करेंगे पॉलन ट्यूब, राइट? अच्छा, यहां पे एक चीज और भी हमें बनानी पड़ेगी, दैट यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है? इनसाइड द ओवरी इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट द ओव्यूल. यहां पे आप मेंशन कर दो दैट हियर लाइज द आपका एग, because they're asking to the reaches to the ovary, right? Now this pollen tube grows along the style of the female part, and then from here it reaches to the ovary, and in this contains the pollen tube contains what? Pollen tube contains the male gamete. yahan pe aap dikha do male gamete. This is how it reaches to the ovary. समझ आ रही है बात? इसको आप ऐसे मेंशन करोगे, ठीक है? तो दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर शोइंग दैट. अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको अपने आंसर में भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे आर आस्किंग एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम ओनली कंसर्न पार्ट हाउ मेल सेल germ cell reaches to the ovary. So pollen tube falls on the stigma, pollen tubes germinate, growth of pollen tubes takes place along the style of the female part, then it reaches to the ovary, and this is how the male gamete reaches to the female gamete which is present in the ovule inside the ovary. ये आपको 2-3 lines you have to write also, right? Otherwise this is the complete diagram. 3 marker question है, तो at least देखो कितने पार्ट हमने इसको कितना पार्ट लेबल किया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have mentioned 8 parts for 3 marker question. So this is more than enough. आपको ये सारे parts mention करने हैं, plus 3-4 lines theoretically भी लिखोगे, so that आपको ये चीज बिल्कुल clear हो जाए कि आपको concept clarity अच्छे से है, right? So this is 3 marker question. We'll mention all the things here. Okay, moving on to next one. Let's see what next question says. Draw the diagram showing the flow of energy from solar input to a food chain having 4 trophic levels in an ecosystem. List 2 inference that can be drawn from the energy diagram. Very simple. We have discussed already number of times in the class. Topic our environment. तो आपको पूरा डायग्राम बनाना है showing the flow of energy, right? उसमें आप I have told you in the class they are asking about the trophic levels, 4 trophic levels. So we'll start with the producers, then the primary consumers, then the secondary consumers, and then the tertiary consumers. तो ये तो आपने डायग्राम शो कर दिया. I'll draw the diagram first. Let me explain. तो ये आपने 4 trophic level शो कर दिए, प्लस आपसे ना सबसे important चीज they are asking you about the they are asking you about the list 2 inferences. मतलब आपको पूछिए 2 चीजें बतानी है, 2 बात बतानी है which actually being expressed from the diagram, है ना? तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे कि क्या आपको we can conclude from this diagram. So we have to draw the 4 trophic level. ठीक है? 4 trophic level like this you have to draw, and they are asking that they are getting the energy from the solar input. Okay, तो यहां पे आपने दिखा दिया, sun दिखा दिया, mention कर दिया इसको, solar energy getting by the sun. And what will be the first trophic level? First trophic level always be the producers. ठीक है? Producers means we know that, so see they are asking about these 4 trophic levels. So with the help of this producers you have to mention that these are the plants which are always the producers. तो आप यहाँ पे plants लिख सकते हो या फिर आप grasses लिख दो,
ठीक है, तो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. यहाँ मेंशन भी कर दो दैट दिस इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे. दिस विल बी आवर प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट. प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकम्स आवर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. You have to mention this all in the diagram. Then only the concept clarity will be there. Then will be the secondary consumers. This becomes our third tropic level. Right? Then will be the tertiary consumers. This will become our fourth tropic level. तो ये सब आपको अच्छे से बताना है. Specifying the four tropic level from the solar energy as input. तो solar energy is always be taken by the producers, the grasses. उसके बाद यहाँ पे चाहो तो आप एक examples भी डाल सकते हो. Like आप second tropic level में डाल सकते हो that this is the, you can mention over here the insects. हमने फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी कि प्लांट्स के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए डाला प्लांट्स एंड ग्रासेस. सेकंड के लिए आप इंसेक्ट्स डाल सकते हो. थर्ड के लिए आप फ्रॉग्स डाल सकते हो. फोर्थ के लिए आप स्नेक्स डाल सकते हो. सो दिस इज ऑल्सो शोइंग द एग्जाम्पल्स दैट द कंसेप्ट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ this is the diagram showing the flow of energy from the one to the next tropic level. Now they are asking the two inferences that can be drawn from the energy diagram. राइट तो अभी हमें यहाँ क्या मेंशन करना है, आपको दो बातें बतानी है दैट इज बीन शोन फ्रॉम द डायग्राम. नंबर वन, आप क्या बनाओगे, एरो बनाओगे ऐसे इन ईच ट्रॉपिक लेवल. एंड व्हाट डज इट इंडिकेट? नंबर वन, दैट मीन्स it is actually showing the energy transfer, that is the flow of energy. And as I have drawn the arrows, it is completely shown in the diagram that flow of energy is always unidirectional from the one to the second, second to the third and so on. ठीक है, तो एक बात तो आपने ये बता दी, you will get marks for this. Flow of energy is always unidirectional from the first to the second and then so on. ठीक है. Now, one more thing I have told you in the class, it is also mentioned in your NCERT, 10% law of energy transfer. 10% law of energy transfer. तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा इसको, that as what this law states that 90% of the energy is being used up by the metabolic activities of the organisms present in the first tropic level. Of present in the tropic level, only the 10% energy is transferred to the next one. ठीक है, तो ये आपको बात मेंशन करनी पड़ेगी. ये दो इन्फ्रेंसेस एक्चुअली दे आर आस्किंग यू. यहाँ पे चाहो तो आप इसको मेंशन भी कर सकते हो. अगेन इट विल increase your score. 30,000 joules of energy. यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा 90% has been used up by the organism present in this tropic level. Only 10% is transmitted. तो फिर यहाँ पे आप 3,000 मेंशन कर दो ट्रांसमिशन का, यहाँ पे आप 300 मेंशन कर दो. एंड टू द टर्जरी कंज्यूमर्स इट विल बी रिसीव्ड ओनली 30 joules. ठीक है, तो इससे क्लियर इंडिकेशन हो गया. एरो से आपको पता चल गया फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम दी वन टू द सेकंड एंड सो ऑन. 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से आपको ये बात क्लियर हो गई. 90% इज यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ओनली 10% इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ये नंबर्स मेंशन कर दोगे, बहुत ही क्लियरली आपको टीचर को बात समझ में आ जाएगी कि आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कंप्लीटली. राइट, आई होप आप लोग ऐसा ही सब लिख के आयोगे एग्जाम में. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी सेक्शन एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 4 marks. ओके, question says sex of an individual is determined by different factors in various species. Absolutely, sex of an individual is determined by various factors. I have told you in the class also. Some animals rely entirely on the environmental cues, while in some other animals, the individual can change sex during their lifetime, indicating that sex of some species is not genetically determined. The question is saying, and we also know that sex is not always genetically determined. It can be determined by the environmental conditions. Right. However, in human beings,
the sex of an individual is largely determined genetically. जबकि हमारे अंदर, like in human beings, the sex is always determined genetically, but in some other animals, it can be determined by some other means, like environmental means. Right? Now, what the question says, it says, in what way are the sex chromosome X and Y different in size? अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं जाना इधर उधर. They're asking about the way they are different from each other. So simply you have to mention that Y chromosome is smaller than the X chromosome. That is only one line you have to write for the answer. Y chromosome is smaller than the X chromosome, because they are just asking you about the size of the X and Y chromosome with their difference, with respect to difference. Okay, name the mismatched pair of sex chromosome in humans. खूब अच्छे से पढ़ा था हमने क्लास में. I guess तुम लोग को भी मालूम है ये चीज, और आंसर जरूर अच्छे से लेके आए होंगे. X and Y, they are the mismatched pair of sex chromosome. है ना? We know that there are two categories, XX and XY. तो mismatched pair पूछा है ना, तो हम XY लिख देंगे इसमें. That is your answer. ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम. अब देखो ये कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी आस्क है एग्जाम में, इस बार भी पूछा गया है. आपसे क्या पूछ रहे हैं, वो उतने क्रोमोसोम्स बताने हैं अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं बताने, हमें बाकी और क्रोमोसोम्स बताने हैं. तो उसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस. कई बार डिस्कस हुआ है क्लास में, है ना? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस आर 46. ठीक है, वी नो दैट a pair of chromosome is a sex chromosome in females and males respectively. तो a pair of chromosomes का मतलब है कि only out of 46 only 2 chromosomes are the sex chromosomes. सही बात है ना? बाकी कितने बचे हमारे पास? 44 बचे. तो आपके 44 क्रोमोसोम इज द आंसर. सिंपल, कहीं नहीं जाना इधर उधर, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. राइट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स अपार्ट फ्रॉम सेक्स क्रोमोसोम. सेक्स क्रोमोसोम्स को निकाल दो, बाकी जो क्रोमोसोम्स है दैट इज योर आंसर. वी नो दैट ओनली अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज द सेक्स क्रोमोसोम, ईदर XX और XY. तो हमने 2 क्रोमोसोम्स को निकाल दिया, 44 इज द आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. साइटिंग टू एग्जांपल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिन्ड जेनेटिकली. है ना? तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको बताने हैं, ये बताते हुए कि सेक्स इज नॉट ऑलवेज डिटरमाइंड जेनेटिकली एज इन केस ऑफ ह्यूमंस. राइट? तो इसमें आप 2 एग्जांपल्स कोट कर सकते हो बहुत अच्छे से. क्लास में भी डिस्कस किया था हमने. एक आप रेप्टाइल्स का एग्जांपल्स दे सकते हो. फॉर एग्जांपल लिजर्ड्स की हम बात कर लें. सो यू नो इन लिजर्ड्स व्हाट हैपेंस, इट इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली. इट इज द टेम्परेचर आउटसाइड दैट डिटरमाइंस द हाउ द फर्टिलाइज्ड एग्स कंटेन वेदर द मेल बेबी और फीमेल बेबी. The fertilized egg give rise to male or female baby. It is determined by the external temperature of an environment. तो एक एग्जाम्पल आप रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स का डाल सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल भी आई गेस आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास अबाउट द स्नेल्स विच इज वन ऑफ द मॉलस्क्स. है ना? तो स्नेल्स में दे कैन चेंज देयर सेक्स with respect to the outer stress and environmental conditions. तो ये 2 एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हो, बिकॉज इन बोथ द केसेस द सेक्स इज नॉट डिटरमाइनिंग जेनेटिकली, दे आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. In one case, the temperature is actually determining the sex in case of lizards. In the second case, it is the stress and the environmental conditions that determines the sex, and that is in snails, one of the mollusks. Right? तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप डालोगे, you'll get the marks for this. Right? चलिए आगे देख लेते हैं. What next question says? Just a minute. Okay. Draw a flow chart to show that sex is determined genetically in human beings. तो आपको और करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है. You have to either give the answer of that one or this one. तो ये बहुत अच्छे से हमने अगेन क्लास में पढ़ा था, आपकी किताब में भी गिवन है. फ्लो चार्ट बताना है आपको. सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली ह्यूमन बीइंग्स. तो पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे? पहले स्टार्ट करोगे आप क्रोमोसोम्स नंबर से एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स फीमेल्स एंड मेल्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबसे पहले फीमेल्स लिखोगे एंड इन द अदर कॉलम यू विल राइट मेल्स.
We know that in each case females and males we have one pair of sex chromosome, तो वही उसको specify कर दो. X and X is present in females, X and Y is present in males. ठीक है, आप देखो यहाँ पे X and Y प्रेजेंट है मेल में, तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, मैंने क्लास में खूब अच्छे से आपको डिस्कस किया था ये, मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक. Why we are calling they are heterogametic? Because they have two different kinds of chromosomes in them, है ना? And females are what? Females are homogametic. Right? Why homogametic? Because they have same type of chromosome. XX the same type, XY the different type of chromosome. That's why males are heterogametic. Now when they produce gametes, it will be what? X and Y, right? And the females will produce X and X. ठीक है? So you know it is the X of the males and the Y of the males which decides the sex of the child, है ना? I mean if the newborn baby is getting X from the males, X from the father, and if whether this X goes with this X or whether this X goes with this, it is always the female child will be there. Because why is it so? Because we know that females contains only X and X chromosome. So if a newborn will get X from the male or the father, it is always going to be the female child. Because why? The female contains the two sex chromosome. ठीक है? आगे देख लेते हैं. Now if the Y fuses with this X or with this X, it is always will be the male child. Because अभी हमने देखा that males contain XY chromosome. So if the newborn baby is receiving the Y chromosome from the father, it is always going to be the male child. Why? Because females again has two X as their sex chromosomes. ठीक है? So it is the male which decides the sex of the child. If the newborn get the X from the father, it will be a female child, and if a newborn will get the Y chromosome from the father, it will always be male child. So this is how you have to draw all the inferences to show that how sex is genetically determined in case of human beings. ठीक है? तो आपको पूरा इस तरह से मेंशन करके बताना होगा, देन ओनली यू विल गेट दी मार्क्स. और जो मैंने थियोरेटिकली आपसे लाइंस बोली अभी, उसको एज थियरी फॉर्म में भी लिख दो. जैसे कि लाइक इट इज ओनली द फादर हु डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ मेल्स, दैट इज फादर. ठीक है? इफ अ न्यूबॉर्न गेट्स एक्स फ्रॉम द फादर, इट इज ऑलवेज द फीमेल चाइल्ड. इफ अ न्यूबॉर्न गेट्स वाई फ्रॉम द फादर, इट इज ऑलवेज द मेल चाइल्ड. तो पहले इसको बना दो, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकली अपनी 2-3 लाइंस में एक्सप्रेस कर दो, यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस. सो आई गेट दिस ऑल फॉर द बायो सेक्शन. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी ऑफ कंटेनिंग 4 मार्क्स. ठीक है? तो आई गेस तुम लोग ने ऐसे ही आंसर्स दिए होंगे जिस तरह से मैंने आपको समझाया है अभी, और आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बायो में बहुत अच्छा स्कोर करोगे. आई एम श्योर यू मस्ट बी स्कोर स्मार्टली इन योर कंप्लीट साइंस पेपर, बिकॉज फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सारे एनसीईआरटी से हैं. तो आई मीन यू पीपल विल बी डूइंग वंडर्स इन योर एग्जाम्स. सो दैट्स ऑल फॉर द बायो पार्ट, and that's all for today's session. We'll meet again in the next video. That's all for today's one. Thank you all. Hello students, in today's session we are going to discuss the science paper of class 10th term 2 examination 2022 chemistry part. So chemistry के questions जो आपके पेपर में आए थे हम वो discuss करेंगे. We'll go thoroughly through the solution. Question number 3 was of chemistry. Consider the following molecular formula of carbon compounds. इसमें आपसे बोला गया है कि इनको consider करते हुए आपको कुछ जवाब देने हैं. First question is which one of these compounds belong to the homologous series of alcohols. तो alcohols का general formula is CnH2n plus 1 and OH. So basically second वाला CH3OH. alcohols में आपका functional group होता है OH functional group. So that is why it is very important. तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा CH3OH. Now identify the compound. B part is saying identify the compounds having triple bond between carbon and carbon. See triple bond के लिए
जनरल फॉर्मूला इज CnH2n -2. सो यानी कि आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी वेरी लेस, एंड एज वी कैन सी इट इज C3H4. n का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे 3, तो यानी कि C3, और H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 3 6, 6 - 2 4, तो C3H4. सो इसका आंसर है C3H4. Now write the molecular formula of the first member of the homologous series to which CH3COOH belongs. CH3COOH belongs to the homologous series of carboxylic acid. इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है. अब ये यानी कि सेकेंड मेंबर होगा, तभी हमसे इससे पहला वाला मेंबर पूछा गया है. फर्स्ट मेंबर विल हैव ओनली 1 कार्बन. नाउ द फंक्शनल ग्रुप विल रिमेन एज इट इज. तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा HCOOH. First member will have only 1 carbon in the carboxylic acid functional group. This is methanoic acid. Now, D part is write the general formula of the series to which the compound C4H8. C4H8 is CnH2n जैसे हमें दिखाई दे रहा है. This is butene. तो इसका general formula for it belongs to the category alkenes, and general formula is CnH2. And this is the general formula. The category, the homologous series, it is alkenes. So this was the solution of question number 3. Next question states that it is of section A. अभी ये जो चल रहे हैं question number 3 and 7 they were from section A और 2 mark questions. और जो इसके बाद में हम section B के questions देखेंगे, chemistry में 2 questions उसमें भी आए हैं, those were 3 mark questions. So state the modern periodic law. Modern periodic law हमारा क्या कहता है, that properties of element are periodic function of their atomic number. Modern periodic law is based on atomic number. How many rows and columns are there in the modern periodic table? So you have 18 groups and 7 periods. तो वही आपके रोज एंड कॉलम्स होते हैं, यानी कि रोज जो होती है वो पीरियड्स होते हैं और जो कॉलम्स होते हैं दे आर ग्रुप्स. सो यू हैव 7 रोज एंड 18 कॉलम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम सेक्शन बी. एज आई सेड अर्लियर इट इज अ 3 mark क्वेश्चन, और ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था. इसमें आपको और वाला ऑप्शन गिवन था. ये वाला सवाल ये कह रहा है कि 2 different forms of carbon that is diamond and graphite have different structures and very different physical properties even though their chemical properties are same. Explain why. See, carbon in the form of diamond has regular geometry या आप कह सकते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है किससे, कार्बन के दूसरे एलोट्रोप जो कि होता है आपका ग्रेफाइट. So this one is your graphite. Graphite जो होता है it is very different. Why? Because it has hexagonal sheet structure. तो ये hexagonal sheets की फॉर्म में होते हैं, तो जो लेयर्स होती है वो एक दूसरे पे फ्लोट करती हैं. तो ये जो शीट्स है दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो ऑन अदर. तो ये सॉफ्ट होता है और ये आपका काफी हार्ड होता है. That is why they have different physical properties. But क्योंकि दोनों के अंदर सिर्फ कार्बन ही है, they both are allotropes of carbon. कार्बन के different physical forms है. दोनों का केमिकल बिहेवियर यानी कि एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखें तो दोनों के अंदर कार्बन का एटम होता है. That is why the chemical properties are same. The chemical properties are same due to the presence of carbon in both. Next question है आपका स्टेट द रीजन, मतलब इसी का ही और वाला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 10 का,
कि स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म C4 पॉजिटिव कटायन, या फिर गेन करके ये C4 नेगेटिव अनायन क्यों नहीं बना सकता। सी कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इट इज 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। वो आपसे कह रहे हैं कि ये फिर स्टेबल होने के लिए 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता। दिस इज ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई एनर्जी इन दीज प्रोसेसेस। बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इन प्रोसेसेस के लिए। क्यों? जब आप C4 पॉजिटिव कटायन बनाइएगा तो एटम के जो इलेक्ट्रॉनिक वो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स वो आपके थोड़े ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। नाउ अब हर एक बारी आपको जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आपको उस अट्रैक्शन को तोड़ना है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। C4 नेगेटिव हम इसलिए नहीं बना सकते आसानी से बिकॉज जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डालते जाएंगे देयर विल बी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ, दूसरा डालेंगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, एंड टू ओवरकम दैट आपको और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। दैट इज वाई दीज आर नॉट फॉर्म्ड। नाउ हाउ डज कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम टू फॉर्म कंपाउंड्स? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपका टेट्रा वैलेंसी तो दिखाता है बट इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे दीजिए CH4 के अंदर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच एंड दे शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म द कंपाउंड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 4 सवाल थे, ऑप्शन मिला के और मिला के 5 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑफ केमिस्ट्री। नेम द एलिमेंट हुज कंपाउंड्स फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स देखे थे कंपाउंड्स के। तो वो एलिमेंट्स कौन से हैं? दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिनको उन्होंने बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन लिया था। दिस इज हाइड्रोजन एंड oxygen. Now why did Mendeleev choose these elements? Because they are very reactive. ये ज्यादातर एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बना लेते हैं, हाइड्रोजन और वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ में कंपाउंड बना लेते हैं। तो ज्यादातर एलिमेंट्स के आप फॉर्मूला देख सकते हैं एंड यू कैन स्टडी। दैट इज व्हाई दीज एलिमेंट्स वर यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नाउ हाउ द फॉर्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स हैड हेल्प, बिकॉज जैसे भी कोई चीज हाइड्राइड बनाएगी, इसे हाइड्राइड सपोज अगर आप मान लीजिए आपका NaH बन रहा है, LiH बन रहा है, KH बन रहा है, या Na2O बन रहा है, Li2O बन रहा है, K2O बन रहा है, तो यहां से हेल्प मिल गया कि कौन से एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी जो है आपका वो क्या रहेगा, सेम। So these compounds help to predict the properties कि कौन से ग्रुप में किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्लेस करना है। So that is why the formula help in deciding to the position, that is deciding the group कि कौन से एलिमेंट्स को आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखना है, कौन से को नहीं रखना है। So here the paper is complete, the solution is complete. So all the best for upcoming challenges of your life. Thank you. Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. This session is all about physics paper discussion of your class 10 term 2, and I'll be discussing the second, that is set 2 paper of your physics portion of the CBSE exam. So अगर हम ओवरऑल बात करें एज पर एज फिजिक्स इज कंसर्न, जो आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन है, जैसे टर्म 2 का एग्जामिनेशन में आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द पेपर इज क्वाइट ईजी। सो ईजी टू मॉडरेट के बीच में कहेंगे, टू बी रियली फ्रैंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स कोई इस टाइप का क्वेश्चन कभी उसमें आया नहीं था। एक भी क्वेश्चन पेपर में से आप में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हो। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग द सेट 2 पेपर ऑफ दैट exam. So let me discuss the first question that came in your examination, which is a 6th number question, and it says, as shown in the diagram, an aluminum rod AB, you have been given this aluminum rod AB is suspended horizontally between the 2 poles of a strong horseshoe magnet, and this horseshoe magnet is also given to you.
ओके, सो ऑब्वियसली हॉर्सशू मैग्नेट गिवन है, यहाँ पे आपको पेपर में क्लैरिफिकेशन से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उसमें पेपर में भी ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर नहीं दिखा होता, बट थोड़ा सा एक में मार्क लिखा हुआ था, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो ऑब्वियसली द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इन द अपवर्ड डायरेक्शंस. ओके, so such a way that the axis of the rod is horizontal and the direction of the magnetic field is vertically upward, so which is already given to you. So that means magnetic field is upward. So magnetic field is upward, just like this, or you can easily draw just like this. Magnetic field is upward, and in this, if it is magnetic field is upward and aluminum rod is placed just like this. Okay, so that means it is held perpendicular to it. So now the rod is connected in series with a battery and a key. So it has been connected in with the series and a battery. Okay, now the question says, what is observed when a current is passed through the aluminum rod from end B to end A? So that means current is passed from B towards A. So let this be B portion and this be A portion. Okay, so it was subjected as like this, and the current is from B towards A. So this portion is B and this portion is A. So the current is flowing just like this, and magnetic field is in upward direction. So you can easily say that whenever a current carrying conductor is placed within uniform magnetic field, it will experience force, है ना? तो force experience करेगा. So what is observed? It will gonna experience force, and which direction? It is given by Fleming's left hand rule. तो आप क्या करेंगे? Fleming's left hand rule लगाएंगे. Magnetic field आपका upward है, ठीक है? And current magnetic field आपका upward है, and current in the conductor is over here, ठीक है? So this is the direction of magnetic field and this is the direction of current. So this would be the direction, thumb will give you the direction of force experienced by it. So this aluminum rod will move towards, from this portion it will move towards left. Okay, so it will experience force and will move towards left. Second question was, what change is observed in the situation in which the axis of the rod AB is moved and aligned parallel to the magnetic field and current is passed in the rod in the same direction? So that means if this rod is aligned parallel to the magnetic field is in the upward direction and this is aligned just like this. Okay, now whenever a current carrying conductor is held parallel to the magnetic field, it won't experience force because जो theta angle है, जो कि theta angle जो हमें पता है, the angle between the length of the rod as well as the length of the rod which is taken to be in the direction of current, and this magnetic field is 0. So sin 0 degree is 0 degree. So we already know that force क्या होता है भाई? ILB sin theta. Current तो flow कर रहा है, length of the conductor is also given to you, magnetic field is also given to you. The angle between length and magnetic field vector is 0. So that means it won't experience any force. तो पहले maximum force लगेगा अगर ये perpendicular पे था, ठीक है, and again जब वो parallel हो जाएगा तो minimum force लगेगा, that is 0. Okay, moving on to the next question, which is the OR part. So it says, magnetic field is physical quantity that has both direction as magnitude. Obviously magnetic field strength की क्या है, आपका both directions भी होता है उसमें as well as magnitude भी होता है. So that's why magnetic field strength is a vector quantity. How can statement be proved with the help of magnetic field lines of a bar magnet? So you have to prove this on the basis of magnetic field lines of a bar magnets. We can easily prove it. We know that if I'll draw a bar magnet just like this, magnetic field would be somewhat like this. Okay, it always originates from north and terminates on south pole outside the magnet, just like this. So and inside the magnet it is from directed towards south towards north, just like this. ऐसे directed होता है. Okay, so this is your south pole and this is your north pole. Obviously, how can you find out its the direction of magnetic field? You have to place a compass over here. अगर आप compass यहाँ पे रखेंगे, compass needle, so it will direct towards north-south directions. Obviously, so this would be in the it will direct towards south and this will direct towards north. Again आप यहाँ पे एक और यहाँ पे compass रख देंगे, compass needle. So this will direct towards north and this will direct towards south. So this south of this compass will be aligned near to north pole of the magnet, just like this. Okay, so here if you'll
if you'll make a line over here, so the line over here will give you the direction of, if it is directed in this particular direction, this will give you the direction of magnetic field strength at that particular point. तो यहाँ पे magnetic field इस direction में, इस point पे magnetic field इस direction में, इस point पे magnetic field इस direction में, and so on. You can easily get the value of magnetic field around a bar magnet using this magnetic field lines. Okay, and how would you prove it, its magnitude? Obviously, more is the magnetic field lines, more would be the strength of magnetic field at that particular point. So यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे magnetic field, so degree of closeness of the magnetic field will give you the strength of magnetic field at that particular point. Also एक और experiment कर सकते हो कि साथ में आप क्या करो, आप यहाँ पे साउथ एक और साउथ एंड नॉर्थ का एक मैग्नेट ले लो, ठीक है, साउथ पोल फेसिंग ईच अदर. सो जितना जैसे पास आएगा, जितना पास आएगा तो उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना. तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पे ज्यादा है नियर पोल एज कंपेयर टू आउटसाइड. ओके, सो इससे भी एक्सपेरिमेंट से इजिली यू कैन इजिली डेमोन्स्ट्रेट इट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट केम इन योर एग्जामिनेशन इज this one, the eighth one. So, and the eighth one, and it says an electric motor rated 1100 watt is connected to 220 volt main. Find the current drawn from the mains. Obviously we know that you have been given a motor whose power is 1100 watt, okay, and connected to 220 volt of main supply. Find the current. We know that power is given by relationship, power is equal to V into I. So I is equal to कितना होगा, power by V. So which is 1100 by 220. So it comes out to be 11.2. So it comes out to 5 ampere. Okay. So the current drawn by the main supply is 5 ampere. So it is quite easier. You just need to have a knowledge about the power relation, which is in relation with potential as well as current. So you can easily find out the value of current from this relation. Now the second question says the electric energy consumed if the motor is used for 5 hours daily for 6 hours. We know that electrical energy is given by relationship power into time. So power is, obviously power is 1100 watt. It can easily be converted into kilowatt as 1.1 kilowatt. Obviously multiplied by time. How much time it is? During day it works for about 5 hours. For 6 days it will gonna work for about 5 6 are 30. So 30 hours for 6 days it will gonna work for this much of time. Okay, for 30 hours. So it will be 33 kilowatt hour, which is nothing but 33 unit of electrical energy it consumes during 6 days. Okay, now so this is the value of energy consumed for 6 days. Now you need to find out the cost of energy consumed if the rate of 1 unit is 5 rupees. So cost would be, energy consumed is 33 and each unit cost about 5 rupees. It would be 5, so it comes out to be 165 rupees. So this is the final answer that we are getting. So this question is also somewhat quite easier. Okay, so and it is a numerical based questions. So again the numerical based question that came in your examination, it is quite easier. So बहुत ज़्यादा tough तो नहीं है ये, ठीक है, सीधा to the point formula based question आया था. Okay, we'll be moving to the next question now, which is our part of this question. So it says study the following circuit and find the effective resistance of the circuit. So you have been given this circuit. देखो भाई circuit given है आपको. So this was the circuit given to you. So obviously these two are in series. ये दोनों series में है. है ना? 6 in series with 4, which is 10. Okay. Now this 10 would be in parallel with this again 10. So 10 10 parallel कितना हो गया इन दोनों का effective combination? It would be 5. Now this 5 would be in series with this 5. So 5 5 10 10 plus 10 20. So the effective resistance across the battery would be 20 ohm. Okay. So this would be the 20 ohm. And now the current drawn by the battery is I is equal to V by
R equivalent, that we already also know. V is the potential of the battery and R is equivalent resistance. So the current drawn by the battery would be 20 divided by equivalent resistance, which is 20. So 1 ampere of the current will be supplied by battery. So 1 ampere current यहाँ से supply होगा battery से, just like this, and it will gonna flow. Okay, so it was drawn like this. So this was like this, and the current was flowing just like this. So 1 ampere current also flows throughout the circuit now. Now the third question says potential difference across the 5 ohm resistance. कितना होगा भाई 5 ohm resistance के cross potential difference? Current पता है हमें 1 ampere होगा, ठीक है, and resistance is this, so V is equal to I into R using Ohm's law. So I is 1 and resistance is 5, so it comes out to be 5 volt. Again quite easier question, बिल्कुल to the point formula based question है, ज़्यादा कुछ expertise नहीं है इसमें, तो easily आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है. So we'll be moving to the next question that came in your examination, which is a 9th question. Again it is a numerical based question, ठीक है. देखने में लग रहा है numerical based, but the thing is सिर्फ आपको इसमें draw ही करना है, ठीक है. देखो, you are provided with a resistor, a key and ammeter. So you have been given a resistor, key, ammeter, voltmeter and 4 cell of 1.5 volt each and few connecting wires. Using these circuits, component draw the labeled circuit diagram to show the setup to study Ohm's law. Obviously आपके इस NCERT में एक डायग्राम है टू वेरीफाई ओम्स लॉ, वो डायग्राम ही आपको यहाँ पे बनाना था जिसमें आपको सिर्फ 4 सेल्स लेने हैं, ठीक है. कौन सा डायग्राम था वो? As you can remember 1.5, 1.5, 1.5 and 1.5. Okay. So easily first of all आप क्या करते थे, एक सेल को कनेक्ट करते थे एंड अगेन फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंटेशन के लिए 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल, जस्ट लाइक दिस. इट वाज कनेक्टेड अक्रॉस नाइक्रोम वायर जो लगाया हुआ था जो आपके एनसीईआरटी बुक में, उसकी जगह यहाँ पे क्या रखेंगे हम, रजिस्टर रखेंगे, ठीक है. और पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल मीटर लगाएंगे जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस रजिस्टर. सो अगेन एक एमामीटर भी लगाना है जो कि सर्किट में करंट को मेजर करेगा एंड अ प्लग, ठीक है. So plug can also be inserted. So this is the diagram that you need to draw. Potential हो गया, resistor हो गया, ammeter हो गया, key हो गया and battery भी हो गया जिसका potential हर एक का 1.5 है. So this is the setup for Ohm's law that you need to draw. Now the second question says state the relationship between the potential difference V across the resistors and the current. Obviously the potential is directly proportional to current, so V is equal to I into R, which is the Ohm's law that you need to राइट, ये लिखना था आपको, ठीक है. नाउ फ्लोइंग थ्रू इट, ऑल्सो ड्रॉ वी आई ग्राफ टेकिंग वी ऑन द एक्स एक्सिस. वी नो दैट इफ इट इज ओम्स लॉ, इफ दिस रेजिस्टर्स ओबेज ओम्स लॉ, उसका वी आई ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द, इसका वी आई ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो इसका आई वी ग्राफ पूछा है बिकॉज वी को आपको कहां लेना है, x-axis पे. So V is considered to be in x-axis, its VI graph would also be this, and the angle that it makes with the y-axis, this angle which is slope tan theta will give you the value of resistance, okay, because this is IV graph, this is not VI graph, okay. So I hope most of the concept of the Ohm's law is clear to you in through these questions. इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें पूछ ही ली है, ठीक है, सिर्फ वेरिफिकेशन नहीं पूछा है. अपार्ट फ्रॉम दैट सारा डायग्राम आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन बनाना था, ठीक है, ये ग्राफ ये वाला बना देना था एंड ये रिलेशन लिख देना था. ओके, अगेन इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है. नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन में आपका ये लास्ट क्वेश्चन आया था. इसका अगेन और ऑप्शन भी है. सो ये वाला ऑप्शन कंपैरेटिवली थोड़ा लेंथियर है एज कंपेयर टू योर और ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि और ऑप्शन इज क्वाइट इजियर, ठीक है, एज कंपेयर टू, बिकॉज इसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है इन ऑर्डर टू ग्रास्प दिस क्वेश्चन. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन सेज AB is a coil of copper wire having a large number of turns. So the end of the coil are connected with a galvanometer as shown. So you have been given this coil, its end are connected to the galvanometer just like this, okay,
and which has got large number of turns. The ends of the coil are connected with the galvanometer as shown in the figure. When the north pole of the strong magnet is moved towards, so this is the north pole. So this is the north pole and this is the south pole of the magnet, and it is moving towards it. So the deflection is observed in the galvanometer. Obviously the deflection is galvanometer में show करेगा ही करेगा, ठीक है? So this deflection in the galvanometer implies that जब भी ये जो magnet, if it is moving towards or away from this coil, it shows deflection. इसका मतलब deflection का मतलब इस coil के अंदर current flow हो रहा है, ठीक है? So आप देखो क्या बोलता है ये, state the reason for using galvanometer in the activity and why does its needle deflects momentarily when the magnet is moved towards the coil. State the reason using galvanometer. Galvanometer ही हम क्यों यूज करते हैं? Obviously galvanometer works on the principle of electromagnetic induction, and again it will give the direction of it will also give the direction of current flowing in this particular circuit. So that's why we make use of galvanometer. Okay, now why does the needle deflects momentarily when magnet is moved towards the coil? Obviously whenever the magnet is moving towards the coil, the magnetic field lines across this conductor, this coil would change. Obviously पहले magnetic field lines come enter करेंगे. Whenever it is coming towards it, the more number of the field lines will cross this area of the cross section of this coil. So that means if magnetic field changes across the conductor, then induced current is developed, because of which current will flow within the coil and galvanometer shows deflection. So the only condition that need to be fulfilled is the magnetic field line should change across the conductor. Okay, this can only happen if this magnet is moving towards the coil, or if this magnet is moving away from the coil, irrespective of whichever north or south pole is held in front of this coil. Okay, so the only thing is the magnetic field through this across this conductor should change. Again, if this is at rest, and coil is moving away or towards it, then only the magnetic field through this coil changes. Again you will get a deflection. So the second question says deflection is in the galvanometer is also observed when magnet is held stationary. So that means if it is held stationary and the coil is moved towards the south pole of the magnet. So now in this particular condition, this is south pole and this is north pole, and it is at rest. So it is placed over here and it is at rest. Now this coil is moving towards it. So again this galvanometer shows deflection because there is a change in the magnetic field lines. If coil is coming towards it, the more number of the magnetic field lines are changing. So if the magnetic field lines are changing in the coil, so the flux would be, so flux is nothing but the number of field lines crossing this cross-sectional area, that would change. So if magnetic field lines are changing, so the galvanometer again will show deflection. Okay, so the third question says state the conclusion that can be drawn from this activity. This activity is, the conclusion says कि whenever the magnetic field lines across the conductor changes, induced EMF is produced in it, and because of induced EMF, induced current is produced in it, and the galvanometer shows deflection. Okay, now will there be any change in the galvanometer if the number of turns in the coil increased or more, and a more stronger magnet is moved towards the coil? Obviously if there is more number of the turns, so that means more number of so if there is more number of the turns, so that means magnetic flux through each coil would be more, so that means the galvanometer shows more deflection. Now even if the magnet is, if you will take a stronger magnets, then only if it is moving towards the coil, then only the galvanometer will gonna show more deflection, because more stronger the magnet, more magnetic field lines it has got, so there is more change in magnetic field lines, so there would be more deflection in the coil. Okay, so now we'll be moving to the OR part of this question. It says, what is electromagnetic induction? Obviously electromagnetic induction is nothing but generation of
induced current within the coil when magnetic field change through it. Okay, so whenever a coil is held just like this and a magnet is moving towards it, so it is moving towards it, so magnetic field changes, when magnetic field changes across it, so the induced EMF is developed and the current will be produced in it, and that current is called as induced current, है ना? So what is observed in the galvanometer when a strong bar magnet is held stationary near one end of the coil of a large number of the turns. So you have been given this large number of the turn and this magnet is held stationary, so it is at rest. So will it show any deflection or not? That you need to find out. So it won't show any deflections because the magnetic field lines crossing this coil remains same. So there is no change in magnetic field lines, so that means there would be no current in the coil and there would be no deflection in the galvanometer. That you need to say. So ये बहुत easy question था, बहुत ज़्यादा difficult तो नहीं था, बस it was tricky कि it was at rest. Okay, rest everything was quite easier to learn. Okay, and this overall the paper was quite easier. If I'll talk about if I'll talk about set 1, set 2, set 3 and set 4, so सारे पेपर easy थे. कोई भी question physics में out of the box or you can say out of syllabus तो नहीं आया था, ठीक है? So it was quite easier to score. I hope this question paper is the solution of all the physics portion of the paper is clear to you. Thank you.